So we have discussed different types of functions, है ना? So we have defined the function as function is nothing but the rule. Here we have to discuss trigonometric functions. So for that we are making the use of definition of function. So what is function? So we have defined that function is the rule. Function is the rule. Which type of rule? For example, if you are writing f of x as a x plus 3, है ना? So if you are giving input as a x equal to 1, our function will give f of x equal to 4. That means for each and every value of x, it will give the unique output. Done. So for this, we can say that for unique x, for unique value of x, it will give us unique f of x. What is function? Function is the rule which gives unique output for every unique value of input. जैसे हम f of x डालेंगे ऐसे वो हमें आउटपुट f of x देगा. So this is our function. So now we have to discuss trigonometric functions. We have discussed trigonometric ratios in our 10th standard. So that trigonometric ratios are nothing but the trigonometric functions. So now we are writing that ratio as a function. Suppose f of x that is equal to sin x, f of x equal to cos x, f of x equal to tan x. These trigonometric ratios are nothing but the trigonometric functions. F of x equal to cosec x, f of x equal to sec x, f of x equal to cot x. Done. These are the trigonometric ratios. So if we are writing that ratios as a function, so here we can say this is trigonometric function. Now we have to check how these trigonometric ratios become function. and एक बार check कर लेते हैं. So for that, what you have to check? You have to check that for unique value of x, for this unique value of x, our sin x must be given one unique output. Then we can say that this rule f of x equal to sin x is the function. Clear, students? We have studied trigonometric ratios, but now we are considering that trigonometric ratios as a function, and we are checking whether that given ratios are function or not. So what you have to check? We have to check that for unique value of x, whether we are getting unique value of f of x. So for that, we have to consider one unit circle. What is unit circle? A circle with radius 1 unit. So let us now consider one unit circle. Suppose this is one unit circle. Consider coordinate axis, that is x-axis and y-axis. So these are the coordinate axis. This is our x-axis. This is our y-axis. And here we are considering unit circle. That means radius r equal to 1 unit. Radius r equal to 1 unit. Done. Now we have to consider one angle. So let us now consider one angle, a central angle with x radian. Central angle with x radian. Consider this radius. This is the radius of circle, and this radius of circle making x radian of angle with this center. No, we are considering this radius. So here we can say that this radius is making the angle x radian in the anti-clockwise direction with the x-axis. Value of this angle is x radian, and in the anti-clockwise direction with the x-axis. This is x radian. Done. So here consider this point is B. Consider one perpendicular. This is point A. This is our center O. Now we have to write the coordinates. We have to write the coordinates of this point B. So coordinates of point B. Point B lies in the first quadrant. And this is our Cartesian plane. Point B lies in the first quadrant. So here you have to write the coordinates of this point B. So that means location of point B. So that can be given by its x coordinate and y coordinate. So what is x coordinate?
X coordinate is nothing but the distance from y axis. So this is the distance from y axis. You have to draw one perpendicular. And y coordinate is nothing but the distance from x axis. So this is the distance BA. So here you have to find the value of this AB, and suppose this is point C, BC. So that will give us the coordinate of this point B. Done. This is one right angle triangle. This is 90 degree. This is the angle in radian, x degree. Now, what is the definition of cos x and sin x? Here we can say that our cos x adjacent side by hypotenuse, it's AOA by OB, OA by OB, OA, which is 1 radian, and OB. So what is OB? cos x क्या होगा? sin x पहले लिख दो. sin x, sin x क्या होगा? AB अपॉन OB और OA है ना. यहाँ पर देखो OB, OB कितना होगा? OB is the radius of 1 unit. So here we can write OA equal to cos x and AB equal to sin x. Clear? OB is the 1 unit. So OA, this one is cos x. OA, this is cos x, and AB or OB is radius, which is 1 unit. So AB equal to sin x. This one is sin x. So this is cos x. So this is cos x. So here we can find the coordinates of this point B. X coordinate, distance from y axis. So x coordinate is cos x. Y coordinate, distance from x axis, which is sin x. Clear, students? So here coordinates of point B are cos x and sin x. X coordinate is cos x, y coordinate is sin x. Coordinates of point B. So now, what is our function? Our function is f of x equal to sin x or f of x equal to cos x. That means different values of x, we should get the different values of this sin x and cos x. So here, if this x change, and x means it's an angle. So here, this point can move on this unit circle. Suppose this point comes over here. So if we consider the point B over here, so here we can say that these values will be changed. Now, sin x, cos x will be changed. For different values of this x on this unit circle, the values of the sin x and cos x will be changed according to value of this x. So here, for different values of input x, we are getting the different values of output f of x as a sin x and cos x. So now, we can conclude that for every x belongs to, और for every x from 0 to 2 pi है ना, यहाँ से start करेंगे 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. For every value of x from 0 to 2 pi, we are getting the unique value of sin x and cos x, and therefore the sin x and cos x both are function. The sin x and cos both are function, and they are nothing but the trigonometric functions. Clear? So now you have to find the values of the sin x and cos x for different values of x. Here we have concluded that for different values of x, we are getting the different values of sin x and cos x. So we have to find the different values. So now, again consider one unit circle. This is our unit circle with radius 1. Here radius r equal to 1 unit. Radius r equal to 1 unit. This is our unit circle. Now, suppose this is point A, this is point B, point C and point D. So radius of circle is 1 unit. So now, here we have considered one point B, which making the angle x
which making the angle of x radian with the positive direction of x axis. Now consider this point B, which making the angle of pi by 2. Pi by 2 is the positive direction of x axis. So we're getting point B over here, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा x होगा. This is our x. So now here x is pi by 2. Value of x is pi by 2. Done. माइक म्यूट करो, कौन है? x equal to pi by 2. So for x equal to pi by 2, here we are getting coordinates of point B, which are nothing but the cos pi by 2 and sin pi by 2. If value of this angle is x, then we are getting the coordinates of point B as a cos x and sin x. Now here we are considering this angle x as a pi by 2, है ना? This is 0 and this is pi. This is 90 degree. So x equal to pi by 2. So for this x equal to pi by 2, we are getting the coordinates of point B. So coordinates of point B are nothing but the cos pi by 2 and sin pi by 2. Value of x is pi by 2. So this is pi by 2 and sin pi by 2. Done? Now, if we consider the angle up to here, so here x equal to pi, and from here to here. So here we getting the coordinates of point C, which are nothing but the cos pi and sin pi, cos pi and psi pi. Now here, if the value of this x this much amount, that is nothing but the pi plus pi by 2, that is 3 pi by 2. So here we are getting point D. So coordinate of this point D are cos 3 pi by 2, sin 3 pi by 2, and again if we complete this entire revolution, one revolution, so we're getting x equal to 2 pi. So again here we are getting the values of cos as a cos 2 pi and sin 2 pi. And again if we consider this point A, that means this x making the angle of 0 degree, 0 degree with this x axis. So this is again point is cos 0 sin 0. Done. Now as usual, this is our Cartesian plane, and this is one circle with unit circle. So radius of this circle is 1 unit. So again we can write the coordinates of this point A in Cartesian plane, which is nothing but the x distance is 1 and y coordinate is 0. So these coordinates are nothing but the 1 0. Coordinates of this point A are nothing but the 1 0. Similarly, point B, coordinates of point B are 0 1. Coordinates of point C are minus 1 0, and coordinates of point D are 0 minus 1. So you can compare these values with this coordinate. So we are getting the different values of x, and according to we are getting the different values of sin x and cos x. So for that you have to make one table. So table will be like this. Now, we have studied the values of sin x and cos x up to pi by 2, that is 0, 30, 45, 60, 90. Now we are getting the more values of the sin x and cos x. Suppose this is the value of x. According to different values of x, we are getting the values of sin x and cos x. So which are the values of x? 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. So different values of x are 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and again 2 pi. So 2.0 are nothing but the equal. ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वली आएंगे यहाँ पर. ठीक है. Now what is the sin 0? Sin 0, when x equal to 0 we are getting sin 0. So when x equal to 0, sin 0 is 0. Sin pi by 2, sin pi by 2 is 1. Sin pi, sin pi is 0. Sin 3 pi by 2 minus 1, and sin 2 pi which is 0. Cos 0, when x equal to 0, so cos 0 is 1.
Similarly, cos pi by 2, 0, cos pi minus 1, cos 3 pi by 2, 0, and cos 2 pi, which is 1. So these are the different values of sin x and cos x with different values of x. Clear, students? So this is clockwise direction. You can also consider the anti-clockwise direction. Sorry, this is anti-clockwise direction. We can also consider clockwise direction. So if we consider clockwise direction, then consider the unit circle in clockwise direction. This is our circle. These are the coordinate axis. This is 0. Now अभी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. सो यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ये होगा माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ये होगा माइनस पाई, है ना. ये पूरा घूम के यहाँ तक आएंगे तो ये होगा माइनस 3 पाई बाई 2, और पूरा एक चक्कर लगा देंगे ऐसे तो ये होगा माइनस टू पाई. डन. So which are the coordinates of this point? Suppose this is point D. It's a cos minus pi by 2, cos minus pi by 2, sin minus pi by 2. So cos minus pi by 2, coordinates of this point are 0, minus 1. So cos minus pi by 2 is 0, and sin minus pi by 2 is minus 1. Then, so similarly we are getting the different points on the anti-clockwise direction. So you have to complete this circle by yourself, है ना. यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही गड़बड़ होगी, लेकिन आप डायरेक्ट कर पाएंगे. दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस 3 पाई बाई 2, एंड दिस इज माइनस 2 पाई. यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया 1 0, यहाँ पर माइनस 1 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 0 माइनस 1, और आपको वैल्यू लिख के आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना है. नाउ important point is, what about the revolution of this x more than one time, and here we consider the angles of x up to one revolution. That means 0 to pi by 2, pi, 3 pi by 2, and 2 pi. What happen if this x complete, or x is making more than one revolutions? So finding the values of these trigonometric functions for multiple revolutions, that means multiple values of angles in multiple of 2 pi, है ना. वो क्या होता है देखो, and values of angle in multiple of 2 pi, values of x in multiple of 2 pi, है ना. 2 पाई के मल्टीपल में वैल्यू है, तो फॉर एग्जांपल यूनिट सर्कल पहले कंसीडर करेंगे, है ना. फॉर एग्जांपल अवर एक्स इज मेकिंग मोर देन वन रिवोल्यूशन, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये एंगल ये पूरा यहाँ पर हो गया 2 पाई, और 2 पाई से फिर यहाँ पर आ गया, और ये x हो गया. So what is the value of x over here? So here value of x, that is radian, which is nothing but the one complete revolution, that is 2 pi, and again x. So it's a value of x is 2 pi plus x, or x is radian, which is 2 pi plus x. Done. So here coordinates of this point are nothing but the, ऐसे लिखेंगे cos 2 pi plus x sin 2 pi plus x, cos 2 pi plus x plus sin into and sin 2 pi plus x. These are the coordinates of this point. Suppose this is point A. डन. तो यहाँ पर देखो हम पूरा रिवोल्यूशन कंसिडर करें या फिर सिर्फ इतना x कंसिडर करें. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x, that is 1 radian, one angle having the measure of x radian. So इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे,
if this value of this angle is x radian, so this is nothing but the cos x and sin x, है ना। आप पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर करें तो वो होंगे cos 2 pi plus x and sin 2 pi plus x, but if we consider the only value of this x, it will be cos x and sin x, है ना। पूरा रिवोल्यूशन कंसीडर करो या फिर आप दो रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये x कंसीडर करो, सपोज ऐसा होगा, है ना। ये x ने पूरे दो रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, उसके बाद ये x आया, तो क्या होगा, तो टू रिवोल्यूशन मीन्स 4 पाई, तो ऐसा होगा cos 4 पाई प्लस एक्स, एंड ये दूसरा y कोऑर्डिनेट होगा sin 4 पाई प्लस एक्स, है ना। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन आप कितने भी कंप्लीट करो, ये जो कोऑर्डिनेट a मिल रहा है ना, a के कोऑर्डिनेट मिल रहे, वो क्या मिल रहा है आपको, 2 पाई या फिर 4 पाई करके आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, cos x एंड sin x ही मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस cos 2 पाई प्लस एक्स और cos 4 पाई प्लस एक्स एज ए नथिंग बट दी cos x ओनली, है ना। दैट मीन्स 2 पाई 4 पाई 6 पाई, है ना, ऐसे आप 2 पाई के कोई भी आप इन मल्टीपल ले लो, दैट मीन्स cos 2n पाई, n इक्वल टू 1 ले लो तो 2 पाई होगा, n इक्वल टू 2 ले लो तो 4 पाई होगा, है ना, n इक्वल टू 3 ले लो तो 6 पाई होगा। ऐसे आप 2 पाई के कोई भी मल्टीपल ले लो, प्लस एक्स करो, प्लस एक्स, so that is nothing but the cos x। सिमिलरली आप साइन के भी कोई ले लो मल्टीपल, साइन 2 पाई प्लस एक्स ले लो या साइन 4 पाई प्लस एक्स ले लो या फिर साइन 2n पाई प्लस एक्स ले लो, that is equal to over sin x only। What is the conclusion? Here multiple of 2 पाई becomes 0, है ना। आप ऐसा ले लो cos 10 पाई प्लस एक्स, सो 2 पाई का 5 मल्टीपल ले लिया, तो वो भी कुछ ना कुछ करके आपको क्या मिलेगा, आपको cos x ही मिलेगा। डन। So this is the multiple angle of angles of sin x and cos x in multiple of 2 पाई। तो आपको 2 पाई को जीरो कंसिडर करके जो मल्टीपल है उसको जीरो करके जो एंगल की वैल्यू है वही कंसिडर करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, है ना, ये डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। हाँ बोलो। सो नाउ यू हैव टू फाइंड दी, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर sin x एंड cos x। तो हमारा कंक्लूजन ये था, देखो अगेन एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ। Suppose this is in one radian x radian angle, so coordinates of this point are cos x sin x, here it's a 1 0, this is 0 1, this is minus 1 0, and this will be 0 minus 1, and this is one unit circle, so radius r equal to 1 unit। डन। तो यहाँ पर देखो ऑल द एंगल्स ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल आएंगे, कौन से एंगल आएंगे, तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, ये π/2, इसके बाद ये पाई, ये 3 π/2, और यहाँ पर फिर से आएगा 2 पाई, है ना। तो एक्स एक्सिस पर कौन से एंगल आएंगे, 0 2 पाई, और यहाँ पर कौन सा आएगा अभी 3 पाई, यहाँ पर कौन सा आएगा 4 पाई, यहाँ पर कौन सा आएगा 5 पाई। तो ऑल द एंगल्स विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कौन से 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, ये सब पाई वाले है ना, मल्टीपल्स ऑफ पाई। देखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑल द एंगल्स विच लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0, सो फर्स्ट पॉइंट y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, है ना। जो भी एंगल एक्स एक्सिस पर आएंगे उसके y कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, तो y कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स एक्सिस पर कौन से एंगल आ रहे हैं, तो देखो ये 0 पाई 2 पाई ये सब एंगल आ रहे हैं, सो वो कौन सा एंगल होता है, साइन का होता है, साइन। So we can say that our sin x will be 0, sin x will be 0 on x axis, है ना। x axis पर हमारा sin 0 होगा,
क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल आ रहे हैं उसके वाई कोऑर्डिनेट जीरो आ रहे हैं, हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, साइन एक्स। तो हमारा साइन एक्स विल बी जीरो on the x axis, and on the x axis we are getting which angles, 0 pi 2 pi 3 pi. So for that, for x, for all the values of x, which value, 0 pi 2 pi 3 pi, है ना। और वैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप कंसिडर कर सकते हो, है ना। 0, उसके बाद यहाँ से आएंगे तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई। सो फॉर एक्स इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, for all these values of x, where sin x will be 0. So these values of x are nothing but the integer multiple of pi, है ना। this is one integers, देखो 0 1 2 3, 0 -1, so these are the integers. So here we can say that our sin x equal to 0 for every integral multiple of pi. For every integral multiple of pi, or sin x equal to 0. So integral multiple of pi is nothing but these values, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे x equal to n pi. What is n? Where n is some integer. For every value of x equal to n pi, where n is some integer, or sin x will be 0. So take n equal to 1. So x equal to pi, sin pi will be 0. Sin pi कहाँ पर होगा, ही sin pi is 0. Take n equal to 2. So we are getting x equal to 2 pi. 2 pi कहाँ पर होगा, यहाँ पर. So sin 2 pi is 0. Take n equal to 3. So we are getting x equal to 3 pi. 3 pi कहाँ पर होगा, यहाँ पर, है ना, 3 pi. So sin 3 pi 0. दैट मीन्स आपको याद रखना है कि जो x एक्सिस होती है, x एक्सिस, वहाँ पर हमारा साइन ऑलवेज 0 होगा। और x एक्सिस पर कौन से एंगल आएंगे ऑलवेज, तो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे। कौन से एंगल आएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। दैट मीन्स इंटीजर्स वाले जो पाई है ना, पाई के इंटीजर्स को कोफिशिएंट कंसिडर कर लो, पाई के इंटीजर कोफिशिएंट, वो वाले एंगल। इंटीजर कोफिशिएंट कौन से होंगे, 0 पाई, 0 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करो तो 0 -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, -6 पाई। सो माइनस वाला एंगल, दैट मीन्स ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, वो सब के लिए हमारी साइन की वैल्यू कैसे आएगी, 0। डन। तो अभी आपको कोई पूछे साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, तो वो सब integral multiple of pi. For that value of pi, sin x is always 0. Clear? Similarly, y के लिए भी बोल सकते हैं, x एक्सिस पर ये सब एंगल है, y एक्सिस पर कौन से एंगल आ रहे हैं, देखो। सो y एक्सिस पर हमारे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, है ना। ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आ रहे हैं, देखो, है ना। देखो π/2, उसके आगे यहाँ पर कौन सा आएगा, 3π/2। यहाँ से भी और पाई ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5π/2। और पाई ऐड करेंगे क्या होगा, 7π/2। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वो 0 आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, हमारा cos x होता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पर हमारा साइन एक्स होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट पर क्या होता है, cos। तो cos की वैल्यू 0 आ रही है, कहाँ पर, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। सो फॉर एक्स, देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, सो एक्स कोऑर्डिनेट, x coordinate will be 0 on x axis. On x axis our y axis आएगा ना, so our x coordinate will be 0 on y axis, done. So on y axis we are getting our cos x, so cos x will be 0 for which value of x, x equal to π/2, 3π/2, 5π/2, है ना। You can also consider minus values, so plus or minus values. So this π/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2, these are the
multiples of pi by 2, but which multiple? 1 3 5 उसको हम बोलेंगे odd multiples. So we can say that cos x equal to 0 for all odd multiples of pi by 2. तो odd multiples को हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x equal to 2n plus 1 pi by 2. What is n? N belongs to z, or we can say it's an integer. Done. So अभी check करो. Suppose if you are taking n equal to 0, n equal to 0 put करो. So 2 into 0 plus 1, so it's a only 1, so it's a pi by 2. So for x equal to pi by 2, cos x is 0. Now put n equal to 1. So 2 ones are 2 plus 1, 3. 3 pi by 2, 3 pi by 2. For 3 pi by 2, x is 0. Put n equal to 3. 3 2s are 6 plus 1, 7. 7 pi by 2. For 7 pi by 2, cos x will be 0. Clear? So for all the odd multiples of pi by 2, our cos x will be 0. Clear, students? So we are getting two formulas. First formula, sin x will be 0 for x equal to n pi, where n belongs to z, and our cos x will be 0 for x equal to odd multiples of pi, 2n plus 1, odd multiples of pi by 2, where n belongs to z. Sin x कहाँ पर 0 होता है? Sin x will be 0 on the x axis, all the angles on x axis, है ना? For all angles on x axis, our sin x will be 0, and for all the angles on y axis, our cos x will be 0, है ना? x एक्सिस पर ये सारे एंगल आएंगे और y एक्सिस पर पाई बाय 2 के जो ओड मल्टीपल वाले वो एंगल आएंगे. तो x एक्सिस पर जितने भी एंगल्स आएंगे वहां पर हमारा sin x 0 होगा, और y एक्सिस पर जितने भी एंगल्स आएंगे वहां पर हमारा cos x 0 होगा. x एक्सिस पर कौन से एंगल आएंगे? ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई, ये सब पाई हमारा x एक्सिस पर आएगा, वहां पर हमारा sin x 0 होगा. और y एक्सिस पर पाई बाय 2 के मल्टीपल्स में एंगल आएंगे, है ना? ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आएंगे. So that means pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 6, 7 pi by 2, 8 नहीं 9 pi by 2, है ना? odd multiples of pi by 2. तो वहां पर हमारा cos x 0 होगा. तो आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है. Clear, students? So these are the sin x and cos x. We have considered different total 6 trigonometric functions. So you have to consider total 6 trigonometric ratios. So sin x और cos x का पता चल गया हमें. So now next one is f of x equal to 10x. F of x equal to 10x. So what is 10x? So f of x is nothing but the sin x by cos x. So condition is this denominator cos x must not be equal to 0. So cos x 0 कहाँ पर होता है? Cos x is 0 when x equal to odd multiples of pi by 2. So here cos x must not be equal to 0. So here we have to write the condition where x is not equal to 2n plus 1 pi by 2 for every n belongs to z, है ना? cos 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में. So that is the our trigonometric tan function, है ना? Tan function. Now next function is cot x, cotangent function. What is cot x? Cot x is nothing but the cos x upon sin x. So here condition is sin x must not be equal to 0. So sin x 0 कहाँ पर होता है? Sin x 0 होता है x equal to n pi पर.